Now, multiple agencies are currently probing the mysterious blast in Delhi, explosion that rocked Delhi's Rohini area on Sunday morning that triggered low explosives. It was low explosive blast. The police suspect the blast was carried out to send out a message. India Today has exclusively accessed FIR details of the probe. FIR reveals that the blast caused a large hole in the wall of that CRPF school where the blast took place. Probe agencies also found a white powder-like substance which was used in the preparation of this bomb. Intensity of the blast damaged windows, signboards of the shops around. Cops have also quizzed the person who reported on the blast. However, there is no information yet on the type of explosives used. Meanwhile, the investigative agencies that have found a telegram post related to Rohini blast. This telegram group, run by a Khalistani group, Delhi police verifying the authenticity of this post, has reached out, we hear, to Telegram to get more details as well. इस वक्त मैं उसी साइट पर मौजूद हूं जहां पर धमाका हुआ और यहां पर सीआरपीएफ की जो टीम है वो पहुंची हुई है, जो अधिकारी हैं। ये जो होल है इमामुल आपको दिखाएंगे, ये जो करीब से आकर ये जो होल आपको दिखा रहे हैं, जब धमाका हुआ तो ये सीआरपीएफ के स्कूल की मजबूत दीवार है, इसमें छेद हो गई। अब सीआरपीएफ के जो अधिकारी है, ये दो अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कल एनएसजी की टीम आई थी, एनआईए की टीम आई थी और आज जो सीआरपीएफ की ये टीम है वो बाकायदा आई है इंची टेप लेकर जो मापा जा रहा है। कैमरामैन इमामुल को कहूंगा कि जरा करीब आकर ये दिखाएं कि किस तरीके से जो इंची टेप है ये लेकर जो ब्लास्ट साइट है जहां पर ये विस्फोट हुआ था, काफी शक्तिशाली ये विस्फोट था, तो इंची टेप से बाकायदा उसको नापा जा रहा है। कल की अगर बात करें तो कल जब धमाके के बाद टेलीग्राम चैनल पर एक टेलीग्राम चैनल है उस पर बाकायदा सीसीटीवी को डाला गया और धमाके की जिम्मेदारी ली गई। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लोग उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि धमाके को क्लेम किया गया है इस वजह से बाकायदा दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल को लिखकर डिटेल मांगी है। जब धमाका हुआ तो कितनी तेज आवाज थी, उसके बाद क्या हुआ? बहुत तंगड़ी आवाज हुई थी। उसके बाद पुलिस बाद में ही आई सब लोग। अच्छा। और उससे पहले तो कोई आई ही नहीं। तो जब धमाका हुआ तो क्या हुआ है? लोग भाग गए? आप क्या कर? भागे नहीं, यहीं रहे। भागे कौन? कोई भी नहीं। धमाका हुआ तो यहीं खड़े थे सब, इधर उधर दाएं बाएं। तो ये देख रहे हैं खिड़की के शीशे से पूरे सब चक्कर हिल गया था क्या? हाँ, सारा टूट गया, सारा अंदर ये बोर्ड सब सारा खत्म। अच्छा, सीसीटीवी भी आया, उसमें देख रहे हैं कि जब धमाका हुआ तो मतलब वो काफी तेजी से सब कुछ हिल गया। सब कुछ हिल गया, बिल्डिंग अंदर तक की कोठी हिल गई। पुलिस ने आपसे बातचीत करी? नहीं, पुलिस वालों ने पूछा, दो एक ने बता दिया मैंने। I'm cutting across to Shreya Chatterjee, joining us live from the blast site in Rohini. Shreya, give us more details on this very blast. Tell us how have the investigative authorities come to finding Khalistani links to this blast? We hear that there's a Telegram group that showed signs of being linked to this. Establish how they found that. Well, this is based on a screenshot of a conversation regarding the blast. The CCTV footage was actually shared in the Telegram group. Subsequently, the Delhi police has in fact reached out to Telegram to get the details of the group. Now, source-based information has also confirmed India Today that this particular group is known to be run by Khalistani sympathizers. So the angle is not being read off by the Delhi police right now, and they are investigating on that very part. But we also had multiple agencies coming on the ground yesterday. Nabila, today what we are learning is that the NSG will be submitting its report on the blast, on understanding of what really transpired, what was the kind of explosives used in triggering the entire explosives yesterday, and we will also be seeing a report that will be submitted by the Delhi police to the MHA because the report was sought on the same. So this is what is transpiring on the ground, but it's extremely scary that such a blast happened at a neighborhood which is usually crowded, but till now there has been no arrest made. Police chowki is barely a few meters from this very location, and we're also talking at a time when this is heavy festive season with crowding at every marketplace. So Delhi police has already put all marketplaces on high alert, and there's patrolling also that is being done. But as of now, Delhi police is zooming in on the CCTV footage of the entire area to zero in on the suspects, because more than 24 hours, no arrest has been made as of now after this blast. Shreya, has there been no suspect that they found even on the CCTV so far?
Well, there hasn't been any confirmation, Nabila. These questions haven't been confirmed or denied by the Delhi police as of now. It is possible that they have already got their hands on the footage, because yesterday itself, I'll just ask my cameraman to point out the CCTV footage from the area that they took. These are the shops which also saw damage from this blast. Delhi police did take CCTV dumps from this area. The entire DVR is with them, so they're definitely looking in at that. And going by the nature of the blast, it is also possible and obvious that those behind this must have recce'd this place quite a lot of times before really going ahead with this, because what the agencies and Delhi police also have confirmed that the nature of the blast suggests that this was only to send out a message and not directly cause damage to public life. Hence, Delhi police is right now, trying to piece the puzzle together and zero in on the suspects. So far, we haven't got a word on them. All right, thanks very much, Shreya, for joining us on that. Now, if I could give our viewers a quick look and a lowdown on what this blast really looked like. Could this, of course, big question is, could this be a dry run for a much bigger blast coming in the days ahead? Well, here's what the cops have found so far. They still are suspecting what exactly was the type of blast. So the mystery around the explosives used in this minor blast here in Rohini, right outside the CRPF school, still looms. We know that at this point, the cops have found some white residue which suggests hydrogen peroxide chlorate, substance that's used to make that blast or that bomb that exploded. Now, also chemical analysis is currently being conducted to find the exact composition of the material used to set up that blast. We also know that at this point, there's no electric timer or electronic part that's been used in the explosive. At least as much as they've investigated, they haven't found any of that in the area where the bomb blast happened. Now, what is that bomb exactly? What is it made of? What type of a detonator is it? All of it that needs to be established by the police, but this is the information that we have right now. In fact, cops suspect a use of a new trigger mechanism entirely. A timer may have been used from a distance, from a different location. That's what the cops suspect. But again, it needs to be established. Cops right now probing if at all this is just a warning. We know that this was done 7:30 a.m., where there were no people at that point. Well, it's at least low crowd. And in the early parts of the morning on Sunday, usually there's hardly any people around there. This is a CRPF school in Rohini. Right outside this blast takes place. Could this just be a warning to the administration and the security forces? Is this a premiere to a bigger blast? That's what the cops now suspecting. Meanwhile, war of words has broken out between political parties, the AAP and the BJP here in Delhi. Aam Aadmi Party and Delhi Chief Minister Atishi claims that this is the BJP's fault. The central government that's responsible for law and order in the national capital, they failed. Atishi claims BJP cannot handle such a situation, nor they're capable of handling it. BJP, meanwhile, hitting back at Aam Aadmi Party, saying that there were issues within the party that AAP must introspect first rather than blaming. So this blame game that continues over a blast that happened in the national capital that certainly sent shockwaves in Delhi, that was on high alert on Sunday. रोहिणी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और एलजी साहब गायब है। जिस शख्स के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जो नुमाइंदे, वो कहां गायब हैं? मेरा सवाल है, वो अब तक रोहिणी क्यों नहीं पहुंचे? अगर एलजी साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो वो इस्तीफा दे दें, किसी और को आ जाने दें जो काम कर सके। पूरी तरीके से दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और केंद्र सरकार फेल है। केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनसे लॉ एंड ऑर्डर देश की राजधानी का नहीं संभल रहा, दिल्ली के लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो रहे हैं, गैंगस्टर वॉर हो रही है, रोज कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या हो रहा है देश की राजधानी में? जो रोहिणी में जो भी एक बम ब्लास्ट है, एक तो जहां ब्लास्ट हुआ है, जो उसका असर हुआ है, उसके हिसाब से ये कोई बड़ी साजिश नहीं लगती है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम कहे कि हम उसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
आम आदमी पार्टी तो जांच भी नहीं मांगती है पे, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है तो। हमने पुलिस अधिकारियों से बात की है, पता चला है कि सीआरपीएफ स्कूल की बिल्डिंग के पास बाहर की जो आउट वॉल है उसके पास एक लो ग्रेड का एक्सप्लोजिव मिला है और किस उद्देश्य से रखा गया पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तो मुझे लगता है हमें जांच का इंतजार करना चाहिए कोई भी टिप्पणी करने से पहले। और लेकिन जहाँ तक दिल्ली के सुरक्षा की बात है तो आम आदमी पार्टी के ये जो नेता बोल रहे हैं तुच्छ राजनीति की बात कर रहे हैं, जरा अपने गिरबान में झांक लें। दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। आज जरूरत इस बात की है कि हमें एकजुट होकर इस तरीके की वारदातों को किसी न किसी तरीके से रोक लगानी चाहिए। हम सब इसमें एकजुट हैं और दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की रक्षा हम सबकी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सरकार अभी तक ये पता नहीं कर पा रही कि इस ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या है, ब्लास्ट किन लोगों ने कराया है। दिल्ली तो सीधा सीधा दिल्ली के भारत के होम मिनिस्टर के अंडर में है, यहाँ की सारी पुलिस उनके अंडर में आती है। कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद होता है तो बड़ा कम्युनल राइट हो जाता है। आज ये ब्लास्ट हो गया,